is a LDR. Photo means light. Yeah, the photon, it comes from the photon. So photoresistor is a resistor whose resistance varies with the intensity of the photons falling on this. That means intensity of the light falling on this. So I take this out. Okay. So this is a and then I need a resistance also. I need a resistance. I have this resistance. This I will keep 10 kilo ohm. So this is 10 kilo ohm. Why I am doing this? If you buy this photoresistor from the market, you will find out that its resistance is of the order of few kilo ohms. So once these two are connected in series, once these two things are connected in series, say suppose I connect it to this point, in series, then what happens is the whatever voltage we apply across from this point to from this point, that will be divided among this resistance and this resistance. And therefore, if you allow the light to fall on this, its resistance will change, but this resistance will not change. Since this resistance does not change and this resistance changes, therefore there is a voltage variation is there. Voltage variation is there at this particular point, at this particular, and that voltage variation is called as a signal, and therefore our Arduino, this photoresistor, that will measure the signal. So what I'm doing now is I'm taking this. Oh, sorry. One of this I have to delete. I'm bringing this here. So one end of the resistance is here, another end of the resistance is here, and whole of this line is connected. So I bring my photoresistor to this point, and I am connecting or I could do the like this. See, this is one end of the resistance. This is another end of the resistance. This end of the resistance is connected to the photoresistor, that is the LDR, and this is the another end. Now this end is a common end. This common end has to go to wherever we want to read the value or read the signal. So I'm bringing it here, take it here, go to this point, and then since it has to be analog reading, therefore I am connecting it to the A0. And to beautify it, yes, this is in line. And I would like to give it the orange color, whatever color you want. I mean, it's not necessary that you give. So what is there? The common point of the resistance and the photoresistor is connected to the A0, where it will be reading the signal. But some voltage has to be given to this particular point, and some voltage has to be given to this end. So what I do is I can directly take this voltage, say 5 volt, and connect it to this point. But I'm not doing that because I want a standardization. That standardization means I'll be connecting it to this particular point.
So this is 5 volt. This 5 volt, and this I will give the color red, because normally the high voltage will say positive voltage is given by the positive. And same, then I will connect the ground. Since ground is here, and there will be, so I'm taking this ground. So taking this ground, go here, go here, and connect it to this particular point. So whole of this line is now ground, and whole of this line is positive. Okay, and for the ground, I choose the color black. Once it is done, now I have to apply positive voltage, 5 volt voltage to this particular point. So I can connect this to positive, and then later on I will. This has been connected to the positive, and what color should I give? I should give the color red. Okay, so this end is connected to the red. And now, what about this? What about this? It has to be given negative. So I connect this to connect this particular point to this line, and this is our black. So you can see that at this end of the resistance, I have given the negative. Oh, this is wrong. Yes. So this negative is coming to this particular point, and this positive is coming to this point. So resistance now, and at this point, this common point I have connected already to A0. Where is? Yes. This common point we have already connected to the A0. Now program. We have to read the program, and let us see how do we make the code. So I'll be picking up again the code. Say for the code again, you can see that this block is coming. Instead of using the block, what we shall be doing is we shall be choosing the text. It will continue. It has given its own program. So I'll go to my program, and copy from there. So I stop sharing from here. Then go to the yes, why not share? Sir, there is a query in a chat box from Subrajyoti Vishwas. He's saying that negative point is not correct. Uh, can you Negative point is explain him not to? correct. Let me Yeah, see. it's a This kid's is ground. query. This is ground. This ground, and whole of this line is negative. Whole of this line is negative, and once see, and this negative, and then this is Yeah, negative. This negative is coming. yeah, it's corrected, sir. Fine. You're correct. Eh? Take it. There is nothing wrong in this. And this point is connected to the positive, and whole of this is positive. Where is the mistake? No, no, sir. He has admitted now. It's corrected. Yeah, because we are here being interactive as well. We want Yes, yes. people to Surely, understand. surely, Yeah. yes. No, no. They say if there is a mistake, the program will not run at all. Yes, yes, sir. Oh, Okay. You okay. continue. Yes. Then I go to the my program. Yes, this is LDR program. Control A, Control C, and then I come to close this program. Like this, and then I choose whole of this, and then Control V. See.
Let me run it first and then show you what is happening. Okay. So program, once it is loaded, so I'm just initializing it. And you see nothing is happening. Isn't it surprising? No, it's not surprising. It is there. There's a Tinkercad's beauty. This is the device which is reading the values. So I clicked it, and automatically a source of the light has appeared here, because we want to change the intensity of the light on the LDR, and its resistance has to change. Okay. So on the monitor also, I am showing you certain values. See, I am down now increasing this, taking it to some point on one side. Yes, there is some mistake. Nothing is changing. It is continuously showing 1023. 1023. Let us see the stop the simulation. Stop the simulation. And the LDR is at pin number 8. LDR we have connected at LDR we have not used. Yes, yes, yes. So based upon what value is you getting, the our LDR should either become on and or the sorry LED should become on and off. So for that again there is a very simple program. So we are choosing again an LED. We choose an LED. We choose a resistor. Take its value equal to 220 ohm, 220, and this is ohms. And then for this we are choosing of course the red. So I am taking it to this side, and just as we did from the this is now the negative side. So I have connected the one end of the resistance to the negative, and second end of the resistance to the and the same end of the LED to that particular line. And then this line has to be connected to the pin number 8. According to our program, this pin has to be connected to the pin number 8. So you go to this, come like this, come like this. You find out pin number 8 is here, pin number 8, and I give it color, say red. So bring it here slightly, bring it here slightly in line with this. So this is the LED connection we have already made now. So let us start simulating again. So simulate this one. Code. Why it is showing 123? Okay, I think we should change the resistance of this to 4.7. Yes.
Let us read the code. LDR pin is connected to A0. Float PR, this is LDR. LDR we have connected to the LEDR, we have connected to the pin number 8. LEDR we have connected to the pin number 8. And then word setups, we have started the serial dot begin. Serial dot begin is used to see the values which we are reading on the our serial monitor. Serial monitor. Our monitor is there. On the monitor, you are able to see the values. So that is perfectly okay. Now, LDR pin is input and LEDR pin is output. Okay. PRB is equal to analog read LDR pin. So we are reading the LDR pin from this particular point, say from A0, because we have defined this as a LDR pin as a A0, and then if okay, then what we are saying is that analog read is this much, then delay del. How much we have defined the del? Del we have defined to be equal to 100. Okay, so that means only for 0.1 millisecond, 0.1 second, 0.1 second it will be delay. We are showing that if PRV is less than 600, then what should happen? Then LDR should be equal to high, and then LDR else digital write LDR pin must be equal to row. There is nothing wrong in this particular program. So, but why the simulation is not giving us the correct value? Now it is giving 0. Oh, okay. Sir, there is in a chat box, it's written that one end of the resistance is connected to A0 as well as 5 volts. No. Is Which it fine? This one? Yeah, it says that somebody is, his name is Nazil. He's saying that one end of the resistance is connected to A0 और वही वाला end जो है वो 5 volts को भी connect हुआ है मतलब same ही. No, he is not right. Actually, see, let me close this. See. Yeah. This line you are saying that this is connected to the red as well as this. No, this is not connected. Actually, this point I can move it to this point. See, it is crossing only. It is just crossing it. Yes, sir. It is not. This is negative. This is connected to this. See, just see this thing. I am just removing it. I'm sorry. Okay. Now this is connected to this point. Resistance is connected to this particular point, and this resistance is throughout this. And I'm taking this particular point to the A0, isn't it? Now this has to be connected to where? This has to be connected to positive. So I just connected to like this. So makes no difference. I'm just connecting it like this, but this doesn't look beautiful. But let us not see about the beauty now at the moment. So this point I have connected to this red, and this point I have connected to the black, and this is our central point. Oh. Yes, sir. Oh no. Now see, previously what I was doing was I was connecting it to this particular point. You can now this goes to this goes to this, this goes to this. Okay, and let me start simulating, and then click this. How much is the reading coming here? 26. Yeah, now it is values are coming. Okay. Thank the participant. Please thank the participant. I am just taking it to this. So you just see
when the value is larger than 650, this is not glowing, and when I take it to this side, this is glowing. See, and in the condition we have put that if PR value is less than 600, which of course at this moment is 26, then this red light should glow. Otherwise, red light should be off, isn't it? Yeah. So, but if the value goes beyond this, beyond the 600 and 600, then of course the red light should be off, and that is actually there. If the light is very low, I mean intensity of the light is very low, the bulb should glow. That means the circuit should make a bulb on. And if the light intensity is sufficiently large, then what should happen? Then the bulb should automatically go off. तो ये ऑटोमेशन है हमारे घरों में, ये छोटा सा डिवाइस लगाया जा सकता है। जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कम हो जाएगी, बल्ब अपने आप जल जाएगा। जैसे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, वैसे ही बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यही इसका फायदा है। देख लीजिए ये सर्किट और ये सर्किट दोनों इंडिपेंडेंट है। एक सर्किट के ऊपर डिपेंड करते हुए, एक सर्किट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हुए दूसरा सर्किट हमारे पास काम करता है। और ये सर्किट हमारे पास हमारे बल्ब का हो सकता है, ये सर्किट हमारे पास मोटर का हो सकता है, ये हमारे पास सर्किट हमारे पास किसी और चीज का हो सकता है। बेसिक जो चीज है वो यही है कि एक सर्किट बना लेते हैं हम, उस सर्किट की वैल्यू रीड कर लेते हैं, और बेस्ड अपॉन दोज वैल्यूज हम जो है ना वो किसी और चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। मोटर ऑपरेट करना चाहें, यहाँ पर हम मोटर लगा दें, मोटर चलना शुरू हो जाएगी। हम कोई और चीज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें, इस समय मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसकी जगह मोटर लगा सकता हूँ, और मोटर रन करना शुरू हो जाएगी। दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत जगहों पर लगाया जा सकता है, जहां पर भी आपकी वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये कर सकते हैं। और अगर आप अब फिजिकल वो देखना चाहते हैं तो देन आई स्टॉप शेयरिंग। ये मेरे पास एक सर्किट है। इसमें मेरे पास एक एंड को मैंने A0 के साथ कनेक्ट करना है। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है उसका एक एंड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एंड हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, और ये उसके साथ कॉमन है। ये उसके साथ हमारे पास ये उसके साथ कॉमन है। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर जाएगा? वो पॉइंट हमारे पास जाएगा किसको? A0 को। और इस सर्किट का जो हमारे पास एलईडी वाला सर्किट, उस सर्किट का एक एंड हमारे पास किसको लगा देंगे? हमारे अपने पिन को लगा देंगे। So let us do for a few minutes, but it will not take more than 2-3 minutes. So let me make the connection. So say I connect this particular point. First of all, I must upload the program, and for uploading the program, I have to Sir, participants are asking for you to explain the programming as well of this circuit. change the programming. What do you mean? नहीं, ये जो प्रोग्राम आपने कोड बनाया है इसको एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं वो। अच्छा, बता दीजिए। ठीक है मैम, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया जितने डिवाइसेस लगाते हैं उतनी पिन्स डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने एक एलडीआर लगाया है, दूसरा हमने एलईडी लगाया है। तो एलडीआर को मैंने क्या दे दिया? इंटीजर एलडीआर पिन इज इक्वल टू A0, और पीआरबी को मैंने फ्लोट बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें हम डेसिमल वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट चेंज होती है तो वो डिजिटली नहीं चेंज होती। जैसे 600, उसके बाद 601 आएगा या 602 आएगा। 600 के बाद 600.5 भी हो सकता है, 600.6 भी हो सकता है। और ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं,
उनको हम फ्लोट टाइप कहते हैं। तो हमारा जो पीआरवी है, इस पीआरवी की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एलडीआर लिख सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर एलडीआर किया तो बाकी प्रोग्राम में हर जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलडीआर करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, एक तो एलडीआर पिन है और दूसरा मेरे पास क्या है, एलईडी पिन है। एक तो एलईडी पिन है, नहीं नहीं एलडीआर पिन है जो कि मैंने A0 पर लगाया है, और उसकी फ्लोट वैल्यू क्योंकि उसको मैंने रीड करना है इसलिए मैंने फ्लोट पीआरवी दे दिया है। पीआरवी एक वेरिएबल है, इसको आप वेरिएबल एक्स भी कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ द एलडीआर भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें आपके लिए। उसके बाद हमने एलईडी लगाया है जिसको हमने पिन नंबर 8 पर लगाया है, तो इंटीजर उसको हमने, और उसके बाद हमने डिले करना है कुछ, एक ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन लेनी है, तीसरी ऑब्जर्वेशन लेनी है, और ऐसा ना हो कि मैं जीरो उसका एलईडी डिले ना करूं तो एकदम से भागता चला जाएगा, जो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर दिखाती है वो हमारे पास भागती चली जाएगी। तो ओके, देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। वर्ड सेटअप में क्योंकि हमने दो पिनें यूज की हुई है, तो हमने पिन मोड एलईडी को जो क्या किया है बोला, हमने आउटपुट कर दिया है, और पिन मोड एलडीआर पिन को हमने इनपुट कह दिया है। और ये जो चीज है जो हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो हमारे पास सीरियल डॉट बिगन है। आपका जो मॉनिटर है, जो आपका जो लैपटॉप है, उस पर एक जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अगर कोई चीज आपने दिखानी है, तो आप क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन लगा देते हैं, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया आपने 9600। क्या है ये, नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकेंड जो हमारे पास ट्रांसफर होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती हैं, जिस जिस स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम बॉर्ड कहते हैं, BAUD बॉर्ड कहते हैं। और वो बॉर्ड जो है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द बिट्स पर सेकेंड है। बिट्स में और बाइट में फर्क समझिए आप। एक बाइट में हमारे पास 8 बिट हो सकते हैं, 16 बिट हो सकते हैं, 32 बिट हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर्मली जो है ना, जो स्टैंडर्डाइज जब पहले बार बताया जाता था, तो वन बाइट वाज 8 बिट। Nowadays it is not 8, one byte is not 8 bit, one byte maybe 16 bit byte, maybe 32 bit byte, maybe 64 bit byte. As the advancement is going on, जैसे जैसे advancement होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ दी बिट्स जो होते हैं एक बाइट के अंदर, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय ये है 9600 बिट्स जो है वो हो रहे हैं। अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो उतने बाइट्स हमारे पास पर सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। और पिन मोड एलईडी का मैंने आउटपुट कर दिया है, क्यों, एलईडी हमारे पास लाइट देता है। और पिन मोड हमने एलडीआर का क्या कर दिया, इनपुट है, क्योंकि वहां से हम रीड कर रहे हैं, कोई चीज रीड कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लूप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, पीवीआर पीवीआर एक वेरिएबल है जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, किसको बोला, एनालॉग रीड का आर जो है वो कैपिटल है, ब्रैकेट में किसको रीड कर रहे हैं, हम अपने एलडीआर पिन को रीड कर रहे हैं। और जो भी रीड वो कर रहा है वो कहां पर आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है पीआरवी में जाकर वैल्यू आ रही है। समझ रहे हैं आप, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनालॉग रीड कर रहे हैं किसको, एलडीआर पिन को हम रीड कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू वो वहां पर रीड कर रहा है उसको वो किस में डाल रहा है, पीआरवी में डाल रहा है। उसके बाद हम डिले कर रहे हैं 1 सेकंड की, क्योंकि हमने डेल इज इक्वल टू 0.1 सेकंड की, डेल इज इक्वल टू 100 का रखा है, तो इसका मतलब 0.1 सेकंड की डिले। अब हम उसको क्या कह रहे हैं, अब हम उसको कह रहे हैं कि सीरियल डॉट प्रिंट में उसने क्या कहा, सीरियल डॉट प्रिंट जब हमने बॉड रेट डिफाइन कर दिया, तो वहां पर हम सीरियल डॉट प्रिंट एक कमांड है जो कि स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर कोई वैल्यू कोटेशन मार्क के अंदर है, ये हमारे पास कोटेशन मार्क के अंदर है, तो वो वैल्यू एस सच दिखाई देगी, बिल्कुल जो भी लिखा हुआ है इसमें वो दिखाई देगी। और उसके बाद हमने कह दिया है सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ये था सिर्फ प्रिंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंट एलन करते ही हमारे पास जो लाइन चेंज हो जाती है, उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद उसके बाद लाइन नेक्स्ट हो जाती है। पर क्या प्रिंट डॉट एलन पीआरवी क्या था, ये पीआरवी है जो कि उसने रीड कर रखा है, जो वो वैल्यू रीड कर रखी है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 678.00 दिखाई दे रहा है, वो प्रिंट करा रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं इफ पीआरवी इज लेस देन 600। अब ये 600 हमने कैसे डिफाइन किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 600 ही डिफाइन करूं। आपका जो एलडीआर है
वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसको बुझा सकता है, दूसरी वैल्यू पर उसको उसको ऑन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर आपको लाइट को जलाना चाहते हैं, किस वैल्यू पर उस लाइट को ऑफ रखना चाहते हैं। तो मैंने रेंडमली ये 600 कर दिया। मैं अगर 600 की बजाय अगर 500 कर देता तो भी मेरा प्रोग्राम उसी तरह चलता, पर 500 पर चलता। 500 से ज्यादा वैल्यू होते ही हमारा जो ये ऑफ हो जाता, और 500 से कम होते। मैं ये कह रहा हूँ कंडीशन, इफ पीआरबी इज लेस देन 100, जैसे ही ऐसी कंडीशन होती है, इफ देन हो गया या डू वाइल होता है ऐसा, उसके लिए फिर एक ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक कैसे बनता है? करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में जो कुछ लिखेंगे वो हमारे पास ब्लॉक होगा। तो इफ पीआरबी इज लेस देन दिस, देन डिजिटल राइट, किसको बोला? एलईडी को। एलईडी को हाई कर दिया आपने। यहाँ पर हाई की जगह 1 लिख देंगे तो भी प्रोग्राम उसी तरह रन करेगा। एल्स नहीं तो क्या होगा? इफ अगर दिस है तो एक ब्लॉक बन गया, अगर ये नहीं है तो एल्स कंडीशन आती है जो हमारे पास दूसरे ब्लॉक के अंदर लिखी जाएगी। ये ब्लॉक फिर उसका ये ब्लॉक आ गया। एल्स क्या किया जाएगा? डिजिटल राइट एलईडी आर कॉमा लो, तो या तो वो ऑन कर देगा या फिर उसको वो ऑफ कर देगा, और ये प्रोग्राम आपका हो गया खत्म। करेक्ट है। इस पीआरबी की जगह अगर आप सेंसर वैल्यू लिखना चाहते हैं, सेंसर वैल्यू, पर अगर आप यहाँ सेंसर वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर भी आपको सेंसर वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। सो दिस प्रोग्राम इज सो सिंपल। Is this program understandable to the participant? Kindly ask, please. I think it is very easy and sir explain to everyone. And now, Tejwani sir, I am also requesting you because time is going to over. Yes, because whatever I have explained, that is there only in the physical program also. It is exactly similar. I am requesting you to end the program. And I request P.K. Adwalia sir to give a few words about this program. Yeah, it's wonderful. Thank you, Sejwani sir. It was good that I didn't come early because I would have then left. But I could not leave because I wanted to thank you and thank the organizers that they are doing great job, and keeping the flag of IAPT high. That is one thing which I would like to say. Sir, there was a thought which was coming in my mind, Sejwani sir. I'm just sharing it with you. There is a very interesting book whose title is Art of Electronics, if I am remembering it correctly. Art of Electronics, sir. Yes, and they have, from physics point of view, they have built up experiments from simple to some projects, and that's one of the best books for physics students. Very good. And maybe I will let you know the maybe you must be knowing about it, let you know the full details of that. I think Cambridge University Press has published it, and there is a manual also available in the market for that. Okay. I wish if we could really translate those experiments with the help of this Arduino board, particularly for electronics labs. And I think that will really, what you call, remove the mystery around the electronics experiments, because most of the times, students and teachers think that they are black box experiments. I was just watching that how you were trying to explain that here is a potentiometer, and then you were trying to tell that what are those two terminals which are connected to positive, which is connected to negative, and then you are trying from drawing from top the voltage which you want to really have in the circuit. So that kind of an approach is indeed very good. And if that book can be converted, or some programs can be made on the basis of that book, particularly targeted to physics students at undergraduate level and at MSc level, I think that will be wonderful. This is one request which I wanted to make. I will definitely like to. Then, sir, I was thinking about a name
for what you call this program itself. तो सेजवानी सर, आपने मावा जरूर सुना होगा. मावा हम इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पे. हाँ जी, हाँ जी. जी, जिसको खोआ बोलते हैं. हाँ जी, हाँ जी. और मुझे याद आ रहा था एक कि ये बहुत सारी जो हमारी डेजर्ट्स बनती हैं, स्वीट्स बनती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है मावा. MAWA मैं उसको कह रहा हूँ, हिंदी में मावा. हाँ जी. And actually, if I use it as an acronym, I would like to call it as mess around with Arduino. Okay. The Yes. way you are using the term tinkering, I am changing that to mess around with Arduino, Mava. And this is a Mava from RC Delhi and Haryana, IEPT. And maybe some kind of a e-magazine can be brought out for Arduino itself, because I think it's a big subject. If we can really bring out, just like, you know, the way we used to have electronics for you, sir. Yes, sir. उसमें हम लोग अपने डायग्राम्स दे दें, कोई राइटअप्स लिख दें, और Arduino के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, मे बी मंथली और मे बी क्वार्टरली. वैसे तो मंथली होना चाहिए मुझे लगता है. और IEPT RC जो है हरियाणा और दिल्ली, ये इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज ए न्यू इनिशिएटिव आल्सो. तो ये जो Arduino का आपने बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है दिल्ली RC03 ने, RC01 ने, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा. और मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम्स को वॉच किया था, और अब भी मैं कर रहा हूँ, और आने वाला जो आप एक लंबा प्रोग्राम करने वाले हैं, उसकी भी मुझे इंतज़ार है कि वो आए और उसमें नेशनल लेवल से काफ़ी लोग और जुड़ें. ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी. Thank So you. as usual, Sejwani sir, you did a great presentation, crystal clear, and I must congratulate RC01 President Seema Watts and her team, who are doing a wonderful job in innovating on some new things and making use of online platform also. And you are going to be soon on offline platform. Yes, I sir. think lots of people around RC01 must have been waiting for that. Today I was watching in the audience, there was one, I think, group from SCERT of Haryana also. And I think it is very good that via SCRTs also this kind of a culture can be spread forward. So if RC01 can go ahead with some kind of an MOU with SCRTs for such programs, I think that will be a big service to the people, because they keep on organizing such programs. And we are having Atal Tinkering Labs in our schools, and Arduino, I think, is a part of the Atal Tinkering Lab also. So it can really influence very many things and the working of the Atal Tinkering Labs as well. So I think it's just wonderful, sir. And I hope participants have liked it. Keep engaging yourself, dear participants, because that is the only way to learn the things. IAPT is with you. You can suggest programs to IAPT regional councils also. And I think IAPT can do wonders for you. I'm sure about that. The dedicated teams which are emerging in the country is a very good sign I can see now. So once again, congratulations and thank you very much, particularly Sejwani sir. Thank you very much. You have a passion, sir. I can see that. Thank you, Thank sir. you. Thank you very much.
Thank you, sir. And I would like to inform you that soon in month of July, we'll be organizing an offline workshop of 25 Yes. teachers in Mount Carmel School and then Amity School as well. So Good. that will be covering. And then we will have all these grassroots level problems that we'll be facing. We'll cover up that in the future workshops. So thank you. Yes. Thank you so much, sir, for your Thank inspiring you. words. Thank you. Thank you, And Arduino thank you. sir. Thank you, Ji. Thank you, Seema ma'am. Ma'am, if you allow, we will end the recording. सिंगल सर वो कल का बता दीजिए आप. So tomorrow program will continue from 10 a.m. onward. This program, this is the part 1 today we have done, and part 2 of this program will continue from 10 a.m. onward tomorrow. Kindly all are requested to join timely. And Tomorrow there will be a question answer session as well, and there will be interactive session. And soon in chat box will be posting an assignment. Please go through those assignments and try to finish it up after 2 days. Once you have this workshop, we will upload it on YouTube. And then you have to finish up your assignment. It's very simple. It's not a very major one, but Single sir, can you put up the assignment in the chat box I so think that participants? Yeah. I think it will be posted tomorrow after this. Okay. Okay, fine. So fine, it's fine. Over to you. Thank you, everyone. We are ending the program now. Thank you, sir. Thank you, Single sir. So we are ending the recording now. Yes. Yes. So now we are ending this program. Yes. Thank you, sir. बहुत अच्छे से आपने explain किया. Thank you so much, sir. आज मैंने आपका पहला session सुना, but it is really very nice to listen to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you.